तो हे एवरीवन, तो मेरा नाम है क्रिस। आप देख रहे हैं टेक्निकल क्रिस। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन XR के बारे में, जो कि मतलब 2018 में लॉन्च हुआ था। आज 2024 हो चुका है और इसके बाद भी इसमें iOS 18 का अपडेट आ चुका है। ओके, तो बीटा अपडेट है, मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है गेमिंग में, और यही देखेंगे इसमें। और फुल वीडियो काफ़ी जल्द आ जाएगा उसका iOS 18 का न्यू फीचर्स का। तो ये देखते हैं इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है 5-6 साल के बाद भी इसमें। तो हमने अपडेट कर चुका है iOS 18 पे, एक बार दिखा देता हूँ। ओके, चलते हैं यहाँ पे अबाउट में। तो देख सकते हैं यहाँ पे iOS 18 पे ये हमारा फ़ोन रन कर रहा है और ये हमारे पास है iPhone XR। तो इसमें हम गेमिंग टेस्ट करेंगे। गेमिंग टेस्ट में हमने फ्री फायर मैक्स ले रखा है। ओके, तो इससे हम फुल मैक्स ग्राफिक्स पे ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या कुछ लैग मिलता है या फिर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। मतलब ऐसा नहीं करेंगे बस गेमिंग परफॉर्मेंस करेंगे इसमें, गेमिंग के साथ इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे। फुल जितना रेजुलेशन है इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वो भी करेंगे और साथ में मतलब एक कैमरा भी लगा देंगे, जो कि देखते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस आता है। तो यहाँ पे हम पहले सेट कर देते हैं इसे मैक्स ग्राफिक्स पे। ओके, चलते डिस्प्ले में और यहाँ पे करते हैं अल्ट्रा में कर देते हैं, मैक्स में नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में करें तो मे भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इशू आ सकता है या फिर हीटिंग इशू। परफॉर्मेंस इशू तो नहीं आएगा इसमें, हीटिंग इशू आ सकता है। ओके, तो इसमें अल्ट्रा पे कर दिया, हाई रेजुलेशन, शैडो भी ऑन कर दिया, फिल्टर भी लगा दिया और FPS भी हाई कर रखा है इसमें। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे CS रैंक का एक मैच लगाते हैं। ओके, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें हमारा रैंक है भी 215 स्टार, यानी ग्रैंड मास्टर के आसपास है। ओके, तो इसमें हम लगा देते हैं ये वाला CS रैंक। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देते हैं साथ में और देखते क्या कुछ परफॉर्मेंस निकल के आता है इसमें। और यहाँ पे वाईफाई हमने कनेक्ट कर रखा है, काफ़ी अच्छा स्पीड आएगा उसमें। होपफुली ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इसमें निकल के आएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ चुके हैं और इसके साथ कैमरा भी लगाएंगे। बट ये बात बता दूँ कि कैमरा थोड़ा बहुत लैग होने लग गया था बाद में, तो उसमें मैनेज कर लेना। मतलब थोड़ा बहुत इसमें FPS ड्रॉप आ रहा था कैमरा में, पर गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था इसमें। ओके, तो वो भी लगा दूंगा, दोनों लगा दूंगा, कैमरा का और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो उसमें आप देख सकते हो कि तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा ओवरऑल आया था। तो इसके बाद हम PUBG का भी लाएंगे, यानी BGMI का गेमिंग टेस्ट, और उसका भी देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म करता है ये फ़ोन उस BGMI में मैक्स ग्राफिक्स पे, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दोनों में ही करेंगे। तो बैटरी ड्रॉप की बात करूँ जिसमें 5% का बैटरी ड्रॉप आया था। ओके, तो वैसे पर बाद में कर रहा हूँ, तो पहले ही बता दे रहा हूँ 5 से 6% का बैटरी ड्रॉप आया था इसमें। और ये गेमिंग मतलब चला गया था 10 से 11 मिनट के आसपास। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं CS रैंक मैच यहाँ पे। Free Fire India is set in a virtual world, and it's not. ओके, तो मैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट राउंड में हमने USP लिया था। ओके, सामने भी काफ़ी अच्छे बंदे हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें फ्रेम ड्रॉप दिखता है या फिर नहीं। ओके, USP 2 लिया और कटाना साथ में ले रखा है और देखते हैं क्या कुछ इसमें परफॉर्म होता है। शैडो भी ऑन है, मतलब काफ़ी अच्छा स्मूथ चल रहा है। बट इस ऊपर वाले में मतलब मे भी फ्रेम ड्रॉप दिख सकता है, बट नीचे देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्मूथ चल रहा था ये। First Doom. Double takedown. Spot. Double takedown.
takedown. Good job. Double takedown. First doom. Double takedown. Triple takedown. Thanks. Resources here. Thanks. First doom. Resources here. Thanks. Resources here. Need equipment. Thanks. Help me! First doom. Double takedown. Help me! Thanks.
have money! Need equipment! Thanks! First doom. Help me! Enemy spot! Double takedown. Help me! First doom. Double takedown. ओके यहाँ पे हमारा फाइनली मैच खत्म हो चुका है और मैच खत्म होने के बाद ओवरऑल बात करूँ तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा निकल के आया है। कहीं भी फ्रेम ड्रॉप का ऐसा कुछ सिचुएशन आया नहीं। मे भी फ़ोन थोड़ा बहुत हीट हुआ था बट यहाँ पे चल जाएगा। आईफोन इतना हीट होता है, नॉन प्रो वर्जन होता है जो इतना हीट नॉर्मल है इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हीटिंग इशू में भी थोड़ा बहुत फेस करना पड़ जाएगा। पर परफॉर्मेंस की बात करूँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है इसमें। तो आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड्रॉयड 8 मतलब iOS 18 इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।